Good afternoon, everyone. We are all gathered here to participate in the 6th session of Check-in for Cognition with Dean, that is CCD. This is an initiative by the DME Media School where every week one or two topics of contemporary issues are discussed by the Dean with the faculty members to enhance the teaching learning experiences for the faculty. The topic for today is challenges faced by the northeastern states of India. This is in the backdrop of the recent violence and riots in the state of Manipur. For this session, I would like to welcome Professor Dr. Amrish Saxena, Dean DME Media School, Professor Dr. Sushmita Bala, Head DME Media School, and all the faculty members. I would now like to request Professor Dr. Amrish Saxena to take the session further. Okay, so as a topic for today's session, as Piyusha has already informed, it is challenges in the northeastern India, and the issue that has come to the fore because of the violence in Manipur. But there are different challenges in different states of northeast, and since in the north, in this area, in the national capital and the other northern areas which are called the mainland people hardly understand as to what this northeast is, what kind of people living therein, what kind of problems they face, which according to me is one of the greatest challenge before national integration in India. So, as we all know, and I believe everybody must be knowing about this, there are 7 states in the northeast which are called the 7 sisters. Earlier, there used to be just one state, which is Assam. But after independence, one after another, the more states were created in the northeast. So, if we count the number of 7 sisters, then it is Assam, then Arunachal Pradesh, then Manipur, Nagaland, Mizoram, and Sikkim, Meghalaya, and Tripura. And so Sikkim is not included in 7 sisters, but afterwards it is added in a way for our understanding of the northeast. So it's called Sikkim is one brother, and then rest of the 7 sisters. So in all, in today's northeast there are 8 states. Interestingly, all these 8 states, despite, excluding Sikkim, all 7 states, they used to be part of Assam after independence. But then all these states which have been created afterwards, they have their distinct issues, their distinct problem, their different kind of societies, different kind of issues, and that is how in fact these states have been created. What are these things on the basis of which the issues and the people are different in these states? Now, if I can tell you in very, very brief about each of the states, the parent state, which is Assam. Assam, as we all know, is the biggest among all 7 in size, in population. And there are peculiar things related to Assam. One important thing is that it is bordering Bangladesh, right? And there have been influx of Bangladeshi people to India, both Muslims and Hindus, after independence. That is how in late 60s and in the beginning of 70s, Assam saw a very big movement against these outside people. And another problem which we find in Assam is because if we go to the pre-independence period, during the British period, that time Assam and Bengal, and in a way even Bihar, even Odisha, they used to be part of the same geographical administrative unit. Right, so a lot of cross currents are there between all these 4 regions. So in Assam, there used to be a sizable population of Bengalis before 47, and after 47, since people continued to come, Bangladesh initially, that was East Pakistan. After 71, that emerged as Bangladesh. So from Bangladeshi side, these Bengalis continued to come to Assam, and earlier also
the West Bengal people, those Bengali, they also continue to settle in Assam. So major population is that of Assamese, then Bengalis. And then another problem in Assam is that though there are less number or less percentage of tribal people in Assam as compared to all other states, as compared to Mizoram, as compared to Meghalaya, or as compared to Nagaland. But still, there are around 15% tribals in Assam. And if I'm telling you this, then this is directly related to one major problem which has happened in Assam, is the Bodo problem. Many of us would have heard about this. So there used to be insurgency in the area which were populated by Bodo tribe. And they demanded a separate state, meaning thereby an eighth state in the northeast in the name of, by the name of Bodoland. But that never happened, despite a lot of insurgency that continued. Finally, the government agreed to create one Bodo Autonomous Hill Council, one separate administrative unit within the Assam. And during the recent accord with Government of India, these Bodo people, now almost everybody has surrendered their arms and they have come in the mainstream. So now in Assam, that Bodo land problem, which is directly related to this tribal problem as we are referring to, so that is no more there in Assam. But still, in Assam there are problems with regard to, we can say, Assamese versus Bengalis, also Hindus versus Muslims. Because even before partition, an interesting fact most of you must not be knowing, before independence, there used to be a sizable population of Muslims in Assam. And at one point, it was almost agreed upon before this partition panel that Assam will go to Pakistan. Pakistan means the East Pakistan, the present day Bangladesh. So, but then there were some freedom fighters in Assam who launched a massive movement against the transfer of Assam to Pakistan. And it could be stopped at a very, very late stage. Otherwise, the whole of Assam and the North-East, the 7 states, today that would not have been the part of India. Right? So the Muslim population is huge in Assam, and then whatever infiltration has been happening in Assam from Bangladesh, for various reasons, it has been happening. Initially, it happened because of poverty in the East Pakistan and now Bangladesh. And because of which the Bangladeshi people used to cross the borders in search of better prospects in India. So during the border area, the areas which were not at all inhabited, or the areas where the Hindus were in good numbers, gradually the Muslims' number increased more than the Hindus' numbers. And then, as we know, that all these Bangladeshi people, they spread all across India. In every city, even in Delhi NCR, you will find the Bangladeshi people in huge numbers, right? So, so initially it was because of the poverty in East Pakistan and now Bangladesh. That continued till 71. In 71, there was a massive movement in Assam, following which there was an accord signed between Government of India, led by Rajiv Gandhi, and the leaders in Assam, the young leaders. That time, even today's perspective, those were used to be the most young leaders, because after that movement, a political outfit was formed. There were two major organizations which led the Assam movement. They were Assam Gan Sangram Parishad and Akhil Assam Student Union. After this accord was signed with the Rajiv Gandhi-led government, they formed a political party, which is Assam Gan Parishad, AGP. And they fought the election and came to power with massive majority. And even the chief minister was of less than 30 years of age.
So youngest people rose to power because of that. After that, again, very recently, the problem happened in Assam again, because after this BJP government came to power in the center, they started this NRC, because of which, again, Assam, there was a massive movement in Assam. So now in Assam, I sum up Assam problems, in fact. So the problem is between Hindus and Muslims, between Assamese and Bengalis. And the tribal problem is not there as such, which is there in other states. It was in Bodoland, but that was also resolved later on. Now coming to Manipur, because discussion has been organized in the backdrop of this, I initially took Assam because it's the parent state and the most important state in the whole of the Northeast. Now in Manipur. Manipur is a state wherein Hindus are in majority. Even, I mean, in Tripura also Hindus are in majority, but in most of the northeastern states, Christians are in majority. Now, this I am telling you on the religious lines. Why this kind of situation is there in the northeast? Because the Christian missionaries came to this northeast part of India much before Britishers entered India. So, and they came from different European countries, not from, actually not from UK, but other European countries. Yeah, many countries. And they settled here and started converting the people. And why the conversion was easy? Because all this was the tribal land. Still, they are the tribal people. So it was easy to lure them and to make them convert. But interestingly, one thing should be understood. This conversion was not from Hindus to Christians. It was from tribals to Christians. And most of the tribals in most of these northeastern states, they do not consider them Hindus. They consider them tribals, whichever tribe they are. So their identity is by their tribe, and then since they have converted to Christianity, then their identity is by their religion, that is Christianity. And sometimes they themselves are confronting this issue, whether they are the tribals or whether they are the Christians. But here there is nothing like Hindus versus Christians or Hindus versus others. Normally there are people, all right thinkers, they plead this that tribals are Hindus, which is incorrect, right? Now coming to Manipur. So Manipur is largely a Hindu dominated state if we look at the state from the religious perspective. Why? Because the conversion happened least in Manipur as compared to Nagaland, as compared to Meghalaya, as compared to Mizoram, right? And it was a Hindu kingdom all through, till the time of partition in 1947, right? So, and then when we say Hindus, the major community which is there is Methi, right? So, and mind it, Methis are not tribals. That's the root problem of this Manipur crisis. They stay in plains. Yeah, they live in plains and they are Hindus. Right? But then in the state of Manipur, there are two more tribes, as Piyush also initially referred to. That is Kukis and Nagas. Now, regarding Kukis and Nagas, now Kukis are more in numbers than Nagas in Manipur, right? But then the border of Manipur is with Nagaland on one side. So when these states were created, there was a problem, obviously, how to divide these states, and it was not at all possible to divide, to create any state only on the basis of a particular tribe living in that area. So that is how the state of Manipur, when it was created, there used to be large population of Nagas, right? Now, there has always been an infight between Kukis and Nagas. In this recent rights, this has strangely happened. Kukis and Nagas have joined hands in their fight against Methis. Why? Because ultimately both are the tribal people.
So they forgot about their own infighting and joined hands. Right now, this recent Manipur crisis, it happened for the reason that Metis, some Metis organizations, they were demanding the tribal status. Why? Because we all know that there is a reservation in India for scheduled caste and scheduled tribes. So they thought, Metis organizations thought that they are not getting the benefits of development because they are not getting any reservation. Like you can, understand this in the context of the North, wherein a lot of people who are not covered under reservation and whether scheduled caste or scheduled tribe, they feel that they are deprived and this SC and ST people are getting all the benefits. And so there's another thing that the Metis people, they are from plains. Yeah. So they cannot purchase any land which is in hills. Whereas the Kukis and Nagas, they have a privilege that they can buy land anywhere. And Metis, there's another thing that Metis were demanding that there should be a permit system like in other northeastern states. And Kukis are objecting it because in a way, because Metis are regarding them that you are the outsiders, you don't belong to this place. So there is opposition two ways. And there is another thing that in defense what they do, that they, if for example, to keep these sections always in a segregation, they will keep a posted that they will keep a defense personnel from Amaiti or from Assamese, so that these states do not coalesce. कि इनमें कभी unity ना आए आपस में. This is a strategy because I read it. Yeah, so I accept very vital points have been raised by I will try to elaborate those things. One, as far as the native peoples are concerned, the whole concept where Netis are natives and these Nagas and Kukis have come from outside. This problem is there in almost all the states. And it's very difficult to decide who are the indigenous people, as we use the term, with regard to the people living in the north. Who are the indigenous people? Obviously, the indigenous people are the tribal people. But which geographical location, who were the people living in that area? I gave you a very interesting answer to this as the point that you raised. For instance, we know that there is a state by the name of Mizoram, right? Now, this is a state where in 95% tribal population is there, right? 95% tribal population is there. And there's just one tribe which is known as Mizo, right? So, Mizo is the name of the tribe and Mizoram, jab kehte hain, Ram means land. So it's a land of Mizo people, Mizoram, right? But I was reading this interesting fact that these Mizo people, Mizo tribe, they settled in this particular region coming from Myanmar, from 16th to 18th century. Now, who is the original person? Now, this is a very major issue which we must understand not only in the context of Northeast, in the context of the whole of India. People fight on this pretext or that pretext that we are natives, these are people are migrants are coming from this state and that state. Nobody knows who are the original people, who are the indigenous people in which part of the land. So जिसको मिजोरम और मिजो भी जिस ढंग से, क्योंकि अभी recently कई इस तरह के incident हुए मिजोरम में भी, they claim that this is their land, so they are outsiders, they are not that way from India, they are migrated from another country, but continued settling in this area for 2 to 3 centuries, and finally they became the main people. Nobody knows whether this Mizoram area was habited by certain people before that or not. Yeah, maybe some indigenous people who are outnumbered, nobody knows about their identity, and all the people are the Mizo people nowadays. So these issues are very difficult to address. Secondly, since as I was telling you that when Manipur was created, Nagaland was created, so it was very difficult to keep Nagas only in Nagaland, to keep Kukis only in Assam, to keep, so it was not at all possible. So वो strategy थी, अगर Nagas को
एक सेग्रीगेटेड लैंड दे देते तो वो उनका स्टेट लेना बहुत इजी हो जाता है। तो ये डिफेंस की स्ट्रेटेजी है कि असम मीन्स जो मिलिट्री है उसको मणिपुर में करो डिपोर्ट, और मणिपुर को, ताकि आपस में हमेशा ये लड़ते रहें और एक दूसरे को डिमन करें, so that कहीं ये एक साथ जुड़ ना जाए। This is the defense strategy. Right, exactly. There's another angle, obviously. So it's good. I mean, if somebody points out such kind of things, because in a lecture that I planned 45 minutes, not possible to cover this all. But these are the vital things. Particularly talking about Nagaland. Nagaland, among all the 7 states in the Northeast, Nagaland has seen the most fierce battle. I will say the battle, exact battle, to get a separate country, independent of India. And there was a massive movement even before partition, and Britishers were not able to handle them. Right? After independence, after India's independence, there was very big movement in Nagaland, and they declared that they are not part of India. We normally know about Kashmir and all of it. We are not aware about the North-East. So Naga people declared their organization, this Naga People's Front. They declared that they are an independent country, nothing doing with India. They formed their own government. I think nobody will be knowing about this. Even they have this permit system, we cannot go there. They formed their own government. And it was a government in exile in Myanmar. Earlier Myanmar was Burma, now it's Myanmar. तो उन्होंने वहाँ पर नागालैंड ने अपनी निर्वासित सरकार गठित की, अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया. This continued for more than 10 years, or even more than that. I don't remember the exact period during which they were practically, Nagaland was practically part of India, but there was a separate state created, separate government created. And Indian governments had a tough time to handle that. Even during Rajiv Gandhi's government, he sent a lot of this officers to talk to the Naga rebels in Myanmar. Mind it, government of India takes, this government or earlier government, whichever, they normally takes a stand that we will not talk to rebels, we will not talk to the traitors, we will not talk to the people who do not believe in India's sovereignty. But government of India sent its representatives to talk to the Naga government in exile in Myanmar, so that they can be brought to the national fold. So finally, it had good results, and Naga people, this organ, Naga People's Front, they had an agreement with Government of India, and they agreed to leave their violent movement and join the ministry, right? And they have been demanding कि जहाँ जहाँ भी नागा पॉपुलेशन है वो ग्रेटर नागालैंड का हिस्सा होगा. तो उसमें करीब मणिपुर के 4 डिस्ट्रिक्ट आ रहे थे जहाँ नागा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी. सो दे सेड कि ये हमारा हिस्सा होंगे ग्रेटर नागालैंड. मणिपुर की सरकार ने कहा नहीं, ये तो हमारा हिस्सा होंगे. एंड देन ए फाइट ब्रोक आउट बिटवीन द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड द स्टेट ऑफ मणिपुर. यहाँ तक हुआ कि मणिपुर में जो आंदोलन हुआ और उन्होंने रोड ब्लॉकेट कर दिया जिससे नागालैंड को सामान न जा पाए. और ये ब्लॉकेट कई बार 60 डेज 70 डेज ऐसे चला है कि ठीक है, उन्होंने कहा अगर तुम हमारे एरिया पे क्लेम करोगे हम तुम्हारी सप्लाई लाइन ही बंद कर देंगे, क्योंकि जो भी रोड जाएगी नागालैंड मणिपुर होके जाएगी, तो सारी सप्लाई ही बंद कर दी. तो कई बहुत भयंकर लड़ाइयाँ हुई हैं, वायलेंट क्लैशेस हुई हैं बिटवीन नागालैंड एंड मणिपुर. ये तो अभी हुआ, ये बड़ा नए तरह का वायलेंस हुआ. नहीं तो वायलेंस was always between Nagaland and Manipur, and the Naga people living in Manipur, they obviously had their affinity with Nagaland, right? तो अभी जो पिछला चीफ मिनिस्टर था कांग्रेस का, ये 2014 से पहले मणिपुर का, he applied a strategy. उसने पूरे मणिपुर में जितने डिस्ट्रिक्ट्स थे उनको रीडिमार्केट किया. जो अभी इरम पहले कह रही थी कि ये स्ट्रेटजी बहुत सारी होती है कि जो प्रॉब्लम एरिया है वहाँ जो लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं उनको आउट नंबर कर दो. तो उन्होंने क्या किया, जहाँ जहाँ नागा पॉपुलेशन ज्यादा थी
उन एरिया को क्या किया, आधा आधा बांटा, एक ए डिस्ट्रिक्ट में दिया, एक बी डिस्ट्रिक्ट में दिया, तो वो ए डिस्ट्रिक्ट में भी माइनॉरिटी में हो गए, बी डिस्ट्रिक्ट में भी माइनॉरिटी में हो गए। तो ये मणिपुर ने स्ट्रेटजी अपनाई, इसका बहुत भयंकर विरोध भी हुआ, बट वो फाइनली द चीफ मिनिस्टर सक्सीडेड इन डूइंग दैट। तो ये नागा प्रॉब्लम को मणिपुर में उन्होंने हैंडल किया। ठीक है, अभी भी बहुत रिसेंटली भी नागा जो भी रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कई राउंड की बातचीत हुई है, बट अभी फिलहाल तो पीस है नागालैंड में, बट स्टिल देयर प्रॉब्लम्स आर नॉट कम्प्लीटली रिजॉल्व। तो नागालैंड के बारे में जैसे मैं अलग अलग स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, नागालैंड के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि नागा तो ट्राइब है उनकी, जिसमें 95% मोर देन 90% जो पॉपुलेशन है वो नागा है, and they all are Christians. They all are Christians, all converted, and a sizable population of Naga is also in Myanmar. तो म्यांमार से उनका सीधा सीधा रिलेशनशिप। तो ये इसीलिए जितनी उनकी जो गवर्नमेंट इन एग्जैक्टली वो भी उन्होंने म्यांमार में ही जाके बनाई थी। फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीडेड, बिकॉज एक समय तो लग रहा था कि नागालैंड तो इंडिया के हाथ से गया, इतना बड़ा मूवमेंट था नागालैंड। ठीक है, और जब हम बाकी राज्यों से कंपेयर करते हैं नागालैंड को, तो नागालैंड कभी भी कल्चरली और अदरवाइज इंडिया के बाकी स्टेट्स के साथ रहा नहीं। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर ओन आइडेंटिटी, राइट। ठीक है, तो आई टच्ड अपॉन नागालैंड। नाउ कमिंग बैक टू मणिपुर। सो मणिपुर में अभी जो रिसेंट वायलेंस हुई, तो एक तो ट्राइबल नॉन ट्राइबल के बेसिस पे हुई, फिर उन्होंने मैती चूंकि ट्राइबल स्टेटस का डिमांड कर रहे थे, और उस पे जो गवर्नमेंट थी मणिपुर की, वो थोड़ा सा बहुत ही मतलब पैसे उनका वो था, वो अवॉइड कर, मैथी के अगेंस्ट में भी कुछ नहीं बोलना चाहते थे, और मैथी को स्टेटस एसटी का मिल नहीं सकता था बिकॉज वो तो नॉन ट्राइबल है। तो इन्होंने बहुत ही ढीली ढैली टैक्टिक्स सारी कांग्रेस ने, बीजेपी ने सबने रखी मणिपुर में इस मामले को लेके। रिसेंटली there was a court verdict wherein the court asked Manipur government to give Meiteis the tribal status. Even then, Manipur government did not take a clear stand on this. They were avoiding. But meanwhile, as soon as this court verdict came, meanwhile, a massive movement started by the tribal organizations. In this massive movement, Kukis and Nagas joined hands, and almost the entire population came on the route, which Manipur government could not handle, and violence started. Now, violence happened in two areas only. One, Imphal, which is the capital of Manipur. So, as we can understand, the capital is in the plains, and it's called the valley, and it's a prosperous land. And it is largely inhabited by Meiteis. And in the government also, Meiteis have a hold. As far as ministers are concerned, bureaucrats are concerned, all Meitei people have a hold. But then as far as the land mass is concerned, this Imphal Valley and the surrounding areas, geographically they occupy a very small piece of land, and large piece of land is in the hills. And hills are habited by Nagas and Kukis. So there was a disproportionate distribution of land. Also in terms of population, because hills में बहुत scattered population है, तो उनका नंबर ट्राइब्स का एरिया ज़्यादा है, ट्राइब का नंबर उतना ज़्यादा नहीं, नंबर में मैतीस ज़्यादा है। As far as development is concerned, development means jobs, industries, ये सारा इम्फाल और आसपास है, हिल्स पे नहीं। ठीक है, तो ट्राइबल्स को रिजर्वेशन तो है, लेकिन उनको उसका फायदा उस तरह से नहीं मिलता। और जो प्लेन्स वाले मैथीज है, उनकी ग्रेजेस है कि सारे स्टेट पे तो इन्होंने कब्जा किया हुआ है, हिल्स इनके पास है, फॉरेस्ट इनके पास है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो दोनों तरफ की अपनी अपनी ग्रजेस हैं, बट द गवर्नमेंट कुड हैव अवॉइडेड दिस काइंड ऑफ क्लैश व्हिच हैपेंड, बट इट इज लैक ऑफ फोरसाइट ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ऑन द पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। दे कुड नॉट फोरसी दैट सच ए बिग movement or such a big level, large scale violence will happen.
और 2 एरियाज में सबसे ज़्यादा वायलेंस हुआ। इम्फाल में सबसे ज़्यादा हुआ क्योंकि वहाँ मैतीज़ थे लार्जली पॉपुलेशन में, तो जितने नागाज थे उनको टारगेट और कुकीज़ को टारगेट कर दिया उन्होंने आसानी से। और इससे भी बड़ा वायलेंस हुआ चंद्रचूड़पुर में, जहाँ पर देयर इज ए मिक्स पॉपुलेशन बट the number of tribals is more as compared to मैतीज़। तो वहाँ पे उन्होंने मैतीज़ को टारगेट किया और बहुत लार्ज स्केल वायलेंस हुई, जहाँ सैकड़ों लोग भी मारे गए, हज़ारों गाड़ियाँ जलाई गईं, और स्टिल द सिचुएशन आर नॉट अंडर कंट्रोल। और when the army reached to evacuate these Methi people, all tribal people were on the road and they did not allow army to take the Metis out of the areas. Why? Because they said that firstly you have to ensure the safety of cookies in Imphal. Then we will let these Metis leave Chandrachur. So that was a real difficult task before Indian Army. They could manage it in 3-4 days to evacuate. So firstly these Metis were put in the camps. Even their life was in danger there. Then somehow they were airlifted and all, they were brought to Imphal. So within a country, this kind of large scale violence, India witnessed, has never witnessed anyway, the way it happened. Or even if we compare, then after the 47 violence, and then we can say the Gujarat violence, and then we can say the 1984 Sikh violence, and then if we then this is the 4th such large scale violence that happened. So the reason is because in all these disturbed areas, you always witness a counter-insurgency programs. That is why the cookies ensure that, because the worst counter-insurgency you can witness in Nagaland. And do you know how they curb these counter-insurgents? It's not like only these are human shield. There's one book by Indra Goswami, where she says that they were deliberately given a fee. And the drugs is so rampant in these in Nagaland that like a flu they are having AIDS. ये report कभी आती नहीं. And that is why these things are happening there. It is not like because of media or anything that it is coming out, and because now they have a government that is for majority. Otherwise these things always happen there. I completely agree with you. In fact, if I can further tell you about Manipur, I do not know if any one of you knows about that. Manipur has faced, after Nagaland, or just as Nagaland faced, the most serious kind of insurgency. ये मुश्किल है तय करना कि नागालैंड में ज़्यादा, मणिपुर में बहुत बड़े स्केल की इंसर्जेंसी रही है, to the extent, and I would suggest everyone to read about, to the extent that the government forces, security forces, they started killing the insurgents in encounters. The kind of thing which is happening in UP today. तो उन्होंने टारगेट किया, इंसर्जेंट्स की लिस्ट बना के सिक्योरिटी फोर्सेस पॉइंट ब्लैंक गोली मार दी थी। ये सब रिकॉर्ड पे है, यू कैन रीड इट। एंड मैनी केसेस रीच्ड द सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द पिटिशनर्स टू प्रोवाइड ए लिस्ट। तो अगर आप गूगल करेंगे आपको पूरी लिस्ट मिलेगी कि कितने इंसर्जेंट्स को इन्होंने फेक एनकाउंटर्स में मारा मणिपुर में। उसमें मणिपुर इज ऑन टॉप, किलिंग इंसर्जेंट्स पॉइंट ब्लैंक इन एनकाउंटर्स। सुप्रीम कोर्ट में पूरा पिटीशन है, सब मिलेगा उसमें। तो हंड्रेड्स ऑफ इंसर्जेंट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 20 years, ऑल यंग पीपल वर किल्ड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस। हम लोग तो नॉर्थ में जानते नहीं ना नॉर्थ ईस्ट के बारे में, क्योंकि हमारा मीडिया कवर नहीं करता। हमारा मीडिया तो मेट्रोज कवर करता है, दिल्ली कवर करेगा, बॉम्बे कवर करेगा, बाकी यूपी बिहार कवर कर लेगा, मध्य प्रदेश का। उनको नॉर्थ ईस्ट से मतलब ही नहीं किसी को। इंडियंस एज इंडियंस हमको किसी को नहीं पता नॉर्थ ईस्ट के बारे में। तो हम यही मानते हैं कि जो है कश्मीरी है बस, और तो कोई आई नहीं प्रॉब्लम हमारे देश में। हाँ, 1 घंटे के में पहुंच जाएंगे तो यही सही है।
और यहीं पाकिस्तान का एंगल भी फिट होता है, तो पॉलिटिशियंस को भी सूट करता है। पाकिस्तान पाकिस्तान करके कश्मीर के बारे में बात करो, पता ही नहीं कि इंडिया के कितने हिस्सों में कितनी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। सर ये जो ट्राइबल्स अपना ट्राइबल स्टेटस डिमांड कर रहे हैं, ऐसे किसी भी स्टेट में कोई ट्राइबल स्टेटस अगर डिमांड करता है तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस? हाँ बिल्कुल अच्छे। इसके लिए एक नॉर्मली क्या होता है पूरे देश में जब से रिजर्वेशन शुरू हुआ आज तक, वो एक नॉर्मली एक कमेटी एक कमीशन बनाया जाता है, वो स्टडी करता है, कंसर्न उनकी राय लेता है, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस स्टडी किया जाता है, सर्वे किए जाते हैं, रिपोर्ट बनती है, रिपोर्ट के बेसिस पे होती है। हर एक बार अगर कोई करेगा तो उसके लिए नया कमीशन बनेगा या ये ऑलरेडी एक कमीशन? अगर गवर्नमेंट को लगता है देयर इज अ नीड देन दे विल सेट इट अप। लेकिन अब ये कर्नाटक के एग्जांपल दे लो जो तुमने कहा, उन्होंने रिजर्वेशन दिया हुआ था, इलेक्शन से 1 महीने पहले कर्नाटक सरकार को सपना आया कि ये रिजर्वेशन गलत है, 5 साल से नहीं समझ में आया था, और उसके बाद उन्होंने इमीडिएटली क्या किया कि मुस्लिम्स का 4% खत्म, का 2% लिंगायत ले लो, 2% किसको दिया, उनको 2% बांटा। और तो यही तो मेन उसको ऑब्जेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट में, कौन सा कमीशन कौन सी रिपोर्ट के बेस पे ये निर्णय लिया कि मुस्लिम्स को जरूरत नहीं है और इन लोगों को जरूरत है। मेन यही इसी ग्राउंड पे चैलेंज हुआ है सुप्रीम कोर्ट। ये थोड़ी कि आज मुझे सपना आया कल मैंने दे दिया किसी को रिजर्वेशन, इट हैज टू बी ऑन सम बेसिस। सर एक चीज़ और, जो ये मेटीज हैं इन्होंने बोला कि हमारे पास पहले एसटी टैग हुआ करता था, तो ये कैसे? दिस कैन नॉट बी अ ग्राउंड, मुझे नहीं पता बट आई कैन आंसर योर क्वेश्चन। दिस कैन नॉट बी अ ग्राउंड। हिस्ट्री के आधार पर यू कैन नॉट डिसाइड। व्हाई? हिस्ट्री में तो फिर वही होगा कि सद्दाम हुसैन को सपना आया कि 8th सेंचुरी में कुवैत यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ द इराकी किंगडम। उन्होंने कहा तो रहा था, भले ही 1000 साल पहले रहा था, भेज दी फोर्सेस की, कुवैत तो हमारा हिस्सा है। ये दिस कैन नेवर बी अ ग्राउंड। ये उसी तरह से होगा कि चाइना को सपना आया कि 1500 साल पहले तिब्बत तो चाइनीज किंगडम का हिस्सा था, उस समय कोई पावरफुल किंग रहा होगा, उसने सारा एनेक्स कर लिया था, तो बस उन्होंने कब्जा कर लिया, ये तो हमारा हिस्सा है। तो हिस्ट्री में तो पता नहीं क्या क्या हुआ है। हिस्ट्री से अगर आपको कुछ लेना है देन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा, उन चीजों को रैशनली देखना पड़ेगा आज के संदर्भ में। 1000 साल पहले क्या हुआ था? 1000 साल पहले तो इंडिया भी नहीं था। तो मतलब सर उन्होंने बोला था कि पास में ही बिफोर 2000 और समथिंग उनके पास ही होता था, और अगर था भी और हटाया गया तो फिर वो भी किसी रीजन से हटाया गया होगा उनका वो स्टेटस। नहीं, उस तरह से अगर हम देखें, मतलब मैं बहुत एग्जैक्ट नहीं लेकिन बता रहा हूँ, जिस तरह से इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर है वहाँ भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी तक नहीं है, लकीली अच्छी बात है, फॉर्चुनेटली, क्योंकि अभी जैसे नागा की अच्छी खासी पॉपुलेशन म्यांमार में है, तो वो वहाँ डिमांड करने लगे कि हम तो इनके साथ रहेंगे, या ये डिमांड करने लगे हम तो हिस्ट्री में एक साथ हैं, हम उनके साथ रहें। इसका तो देयर इज नो एंड टू दिस। सो वी हैव टू लुक एट एवरीथिंग रैशनली एंड इन ए कॉन्टेक्स्ट। नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर जो स्टेट्स हैं उनके बॉर्डर या तो म्यांमार से लगते हैं या बांग्लादेश से लगते हैं, ठीक है। अरुणाचल का बॉर्डर सीधा सीधा चाइना से लगता है। और अगेन अरुणाचल की बात कर लें हम, अरुणाचल was not actually initially the part of British India, जो आज का अरुणाचल है, it was not part of the British India। फिर finally British India में there used to be lot of confrontation between British India and China, लद्दाख से लेके अरुणाचल तक। तो उसमें at one point of time the British government in India they had control of this part which we call today अरुणाचल। इस हिस्से पे ब्रिटिश फौज ने कब्जा कर लिया, राइट? ये वो किंगडम नहीं, कुछ नहीं था, मतलब there was no status as such, इंडिपेंडेंट रीजन्स थे। तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश आर्मी ने वहाँ कंट्रोल किया और उसका नाम रखा नेफा, NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाई उनको चलाने के लिए। जब ब्रिटिश छोड़ के गए 47 में, तो बाय डिफॉल्ट वो पार्ट इंडिया के पास आ गया। तो अभी डिस्प्यूट, इसलिए तो चाइना डिस्प्यूट करता है। चाइना का कहना है तो हमारा हिस्सा है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने छीन लिया था हमसे, तो वो इंडिया से कहता है हमारा वापस करो।
तो ये कहते नहीं तो हमारा हिस्सा है, 47 अंग्रेज छोड़ के गए तो हमारे पास है। तो चाइना का क्लेम अनफाउंडेड नहीं है। चाइना से ब्रिटिश इंडिया ने छीन लिया था, तो वो कह रहे हैं अब इंडिपेंडेंट है हम दोनों लोग, जो हमारा हिस्सा था हमारा वापस कर दो। तो ये जो डिस्प्यूट, अब इसमें किस तर्क पे देखो, हमारा तर्क ठीक है कि जब अंग्रेज जितना टेरिटरी छोड़ के गए वो हमारी हो गई, उनका तर्क ठीक है कि अंग्रेजों ने उनसे छीन लिया था, अब उनका हिस्सा उन्हें वापस चाहिए। अब नाउ व्हाट लॉजिक विल यू अप्लाई हियर? तो ये बड़े मुश्किल सवाल है, ये एमिकेबली बातचीत से ही सुलझ सकते हैं, और कोई सोल्यूशन इन चीजों का है नहीं। इसीलिए वो अभी भी अरुणाचल को इन देयर में चाइना अपना हिस्सा दिखाता है, और अगर अरुणाचल का रहने वाला कोई आदमी चाइना जाना चाहता है, वीजा चाहता है, चाइना वीजा नहीं देता, कहा ऐसे ही आ जाओ तुम तो हमारे सिटीजन हो। ठीक है, तो अभी इसलिए अरुणाचल को लेके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है चाइना की तरफ से। और वहाँ पे तिब्बतियन कल्चर है, वो हैवी वही बुद्धिज्म भी फॉलो करते हैं, जो तिब्बतियन बुद्धिज्म। इसीलिए शायद हम एंटरटेनमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी चैलेंज फेस करते हैं, जहाँ पर हम ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करते हैं। नहीं, मेजर चैलेंज है जो तुमने चैलेंज की बात, सबसे बड़ा चैलेंज पूरा नॉर्थ ईस्ट वर्सेस इंडिया इज द geographical location of that area and the road link with India. इसको पूरा एक कहते हैं एक नेक की तरह से है, एक छोटा सा जोग्राफिकल रास्ता है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को इंडिया के साथ कनेक्ट करता है। तो वो बड़ा सीरियस इशू है, मतलब इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी और एनी वॉर विद एनी कंट्री, आई मीन पर्टिकुलरली चाइना, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है संभालना, और ये हो भी चुका है 62 में दिस हैज हैपेंड। 62 की वॉर में सबको लड़ाई याद है इधर लद्दाख की, यहाँ की लड़ाई किसी को नहीं पता। नॉर्थ ईस्ट में इतना इजी एक्सेस था क्योंकि हमारी आर्मी उस समय वीक थी और नॉर्थ ईस्ट में हमारे बॉर्डर्स प्रोटेक्टेड नहीं थे, तो उसका नतीजा क्या हुआ कि चाइनीज आर्मी बिना रेसिस्टेंस के इंडिया में घुसती चली गई नॉर्थ ईस्ट में 62 की वॉर में। और अगर जो पढ़ना चाहे पढ़े, अगर आज मैं इसमें बता दे रहा हूँ इस सेशन में, इतना इंटरेस्टिंग है 62 की वॉर, आप पढ़िए नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ 62 में। चाइनीज फौज घुसती चली गई, कोई रोक नहीं पाया उनको क्योंकि हमने कुछ बॉर्डर सिक्योर ही नहीं किए थे, और तेजपुर तक आ गए थे। और यू कैन इमेजिन तेजपुर तक आ गए मतलब आपका 90% नॉर्थ ईस्ट वॉज गॉन, और हम नहीं उसको, और अगर वो चाइना वापस नहीं जाता तो हम उनको हटा नहीं सकते थे उस एरिया से। दे हैड एन एडवांटेज। वो तो मैं मतलब पर्सनली मैं वेदर पीपल एग्री और डिसएग्री, चाइनीज को इस बात के लिए वो धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी टेरिटरी छोड़ के चले गए। Why did they go back? जब उनके हाथ में आई गई थी तो उनका कहना, उनका स्टैंड है जो इंडिया में नहीं पता लोगों को, उनका स्टैंड ये है कि वी डू नॉट वांट टू कैप्चर एनी इंडियन टेरिटरी, वी सिंपली वांट टू टेल यू कि हमारा एरिया हमें दे दो, नहीं तो वी कैन बी सो पावरफुल कि हम छीन लेंगे। सर ये सब लिखा उनके पास खाने पीने का खत्म हो गया था, उनकी आर्मी के पास। तो साथ में साथ पढ़ती जा रही हो। नहीं सर, मैंने नहीं खोल रखा, ये मैंने पढ़ा था वो मूवीज में भी सर। ये बोला था कि उस टाइम पर खत्म हो गया, खाने पीने की चीजें खत्म हो गई थी, चाइनीज आर्मी बहुत दिन तक। अच्छा चलो, अगर ये आर्गुमेंट मान भी लिया जाए तो हमारी इंडियन आर्मी तो कुछ रेसिस्ट कर नहीं पा रही थी, वो आराम करते 4-6 दिन में राशन मंगा लेते। उनको इधर से तो कोई पीछे धकेल नहीं रहा था, क्योंकि मैं अभी जब एक बार एक स्टडी कर रहा था ऑल इंडिया रेडियो की, तो मैं गुवाहाटी गया था। गुवाहाटी का रेडियो स्टेशन में मैं उनकी लाइब्रेरी में बैठा और कुछ मैंने यहाँ वहाँ से निकाला, उनके कुछ पुराने मुझे हाउस जर्नल मिल गए गुवाहाटी रेडियो स्टेशन के। अब वो इंसिडेंटली मेरे पास है नहीं, मुझे कुछ लेके आना चाहिए था या उसको कर देता, उस समय मोबाइल तो होता नहीं था जब मैं गया था। तो उसमें वजह से कंप्लीट आर्टिकल जहाँ पे ये था कि दिल्ली से मैसेज गया गुवाहाटी रेडियो स्टेशन को कि इसको खाली करने की तैयारी कर लो रेडियो स्टेशन को, एनी टाइम द ऑर्डर्स कैन बी गिवन टू वैकेट द रेडियो स्टेशन, फॉर द रीज़न कि अगर उन्होंने गुवाहाटी रेडियो स्टेशन पे कब्जा कर लिया चाइनीज़ ने, तो वो सारा इंफॉर्मेशन कंट्रोल उनके हाथ में चला जाएगा। ठीक है, तो आई टॉक्ड अबाउट अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। मेघालय इज अगेन
is habited by tribals, almost more than 90%. 3 tribes are there basically. तो जब क्रिएट भी किया था तब भी इसी आधार पे किया था कि ये सारा ट्राइबल एरिया असम से अलग किया था. तो बेसिकली 3 ट्राइब्स हैं, खासी, गारो और जैंतिया. ठीक है, जैंतिया बहुत ही बड़ी ट्राइब है. तो मेघालय में आज भी यही 3 ट्राइब हैं. तो उनके जो डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं वो भी है, गारो हिल्स है, उन्हीं के नाम पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खासी हिल्स है, जैंतिया हिल्स है. जैंतिया हिल्स वाला जो पूरा एरिया दैट्स बॉर्डरिंग बांग्लादेश. बाकी कुछ एरिया त्रिपुरा के साथ लगता है, कुछ बाकी जो मेन एरिया है वो तो असम से ही एक्सेस है, असम के साथ लगता है, एंड फाइनली बांग्लादेश के साथ लगता है. ठीक है, तो ट्राइबल के आधार पे हम देखें तो वो प्रॉब्लम, लेकिन चूंकि सारे ट्राइब्स हैं, ट्राइब वर्सेस नॉन ट्राइब वाला कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड ये भी जितनी ट्राइब हैं मेघालय में तीनों, ये तीनों ट्राइब्स 90% क्रिश्चियंस. तो ये कंप्लीट कन्वर्जन. इन ए वे मेघालय में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन था मिशनरीज का, इसलिए एजुकेशन 100% मेघालय में. उन्होंने सबको एजुकेट कर दिया, गुड और बैड. मिशनरीज का सबसे कन्वर्जन के साथ साथ वो एजुकेट करते थे. और ये जो इतना नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, चूंकि ये ट्राइबल एरिया होने की वजह से क्या था कि कल्चरली दे, आई विल नॉट से दैट कल्चरली दे वर नॉट रिच, बट देन उनकी लैंग्वेज, उनका बाकी सारी चीज़ों में प्रॉब्लम थी. एजुकेशन नहीं थी, फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी. तो वो जो बोलते थे वो उनकी डायलेक्ट तो थी, उसका कोई लैंग्वेज का स्वरूप नहीं था, रिटन नहीं था. रिटन. तो वो काम अंग्रेजों ने किया. मेघालय का तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि उन्होंने वहाँ की सारी ट्राइबल्स को लिपि दी और अंग्रेजी में ही ट्राइबल लैंग्वेजेस को उन्होंने अंग्रेजी के अल्फाबेट्स दी. और मेघालय इज द ओनली स्टेट इन इंडिया विच हैज इट्स इंग्लिश एज इट्स स्टेट लैंग्वेज. तो इंडिया में एक स्टेट ऐसा भी है जहाँ की लैंग्वेज इंडिया में इंग्लिश. एक है सर ये, या नॉर्थ ईस्ट के? पूरे इंडिया में. अरे या तो हिंदी होगी, तमिलनाडु में तमिल होगी, कर्नाटक में कन्नड़ होगी, हर लैंग्वेज स्टेट, पंजाब में पंजाबी होगी. तो हर स्टेट की एक लैंग्वेज होती है ना. तो वहाँ की लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश है. तो स्ट्रेंज हो गया ना इंडिया में, बट दैट्स अ फैक्ट. ठीक है, तो ये मेघालय का हो गया. मिजोरम रेफर्ड अर्लियर ऑल्सो. मिजोरम में भी काफ़ी प्रॉब्लम इंसर्जेंसी की रही है, और फॉर द रीज़न कि एक तो म्यांमार से बहुत लंबा बॉर्डर है, और बाकी मिजो पीपल हैड नेवर बीन रेडी टू मिक्स विद द अदर ट्राइब्स और अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड ऑल. और बॉर्डर को लेके बहुत डिस्प्यूट है, बट नाउ मोर और लेस दैट बॉर्डर डिस्प्यूट हैज़ बीन सेटल्ड बिटवीन मिजोरम एंड असम. बट स्टिल अभी भी प्रॉब्लम है. अगर रिसेंटली लास्ट ईयर का एक प्रॉब्लम है आर्मी के साथ हुआ था कि आर्मी पेट्रोलिंग में दे फायर, 1 साल पहले का इंसिडेंट है, दे फायर एट ए जीप जिसमें कुछ वर्कर्स लौट रहे थे काम से, उन सबको उन्होंने इंसर्जेंट मान के मार दिया. एंड देयर वाज ए वेरी मैसिव मूवमेंट, ऑल मिजो पीपल केम ऑन द रोड्स, एंड दैट a fight broke out between Mizoram and Assam. तो वो somehow central government intervened और the matter was resolved. उसके बाद फिर जो further violence हुई उसमें कई लोग मारे गए. But then फिर एक inquiry committee set up हुई, and it was proved that they were innocent people and the army killed them wrongly. This means a court martial had to start. जो लोग आर्मी की पूरा समझते हैं कोर्ट मार्शल होना चाहिए था, बट देन कोर्ट मार्शल के लिए आर्मी कोर्ट मार्शल तभी कर सकती है, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन चाहिए थी. तो उस इंक्वायरी कमीशन की क्लियर रिपोर्ट 1 महीने पहले आई थी, बट उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिट नहीं किया कोर्ट मार्शल. नाउ दीज काइंड ऑफ थिंग्स gives signal to the tribal people that they are not treated fairly. तो अभी भी मिजोरम में बहुत अनरेस्ट है इस बात को लेके कि हमारे लोगों को मार दिया आर्मी ने, और ये इंक्वायरी कमेटी में भी प्रूव हो गया, बट नो एक्शन इज बीइंग टेकन अगेंस्ट दोज आर्मी. तो इसी तरह की चीजें ही इनफैक्ट आगे चल के प्रॉब्लम पैदा करती हैं, बिकॉज देन पीपल गेट एलिएनेटेड कि इस इंडिया के साथ रहने से कोई फायदा नहीं, हम तो हमारी बात तो कोई सुनता नहीं यहाँ पे. तो ये इस तरह की प्रॉब्लम अभी भी मिजोरम में है. Which state is left? Tripura. Tripura is a very small state.
जिसका करीब 700-800 किलोमीटर बॉर्डर तो बांग्लादेश के साथ ही लगता है. इट ऑल्सो यूज टू बी ए हिंदू किंगडम बिफोर 1947. एंड ये सारी स्टेट्स में बहुत सारी, जैसे त्रिपुरा का एग्जाम्पल है, त्रिपुरा का एनेक्सेशन इंडिया में हुआ है 1949 में, नॉट इन 1947. इंडिपेंडेंट यूनिट थी 47 में भी. अरुणाचल की तरह ही. हाँ, बाद में वहाँ का जो राजा था कि शायद कोई रानी थी उस समय, वो शी टुक ए डिसीजन टू एनेक्स त्रिपुरा इन इंडिया. That is how became part of India. और वहाँ की पॉपुलेशन हिंदूज है, और वहाँ की पॉपुलेशन में ट्राइबल नंबर में भी समवेयर अराउंड 60% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन में. बट काफ़ी हैं ट्राइबल्स, लेकिन जो डिफरेंट तरीके की ट्राइबल्स हैं. लेकिन सर तो, अब जो वहाँ पे इंडिजिनस है ना, वो सिर्फ 45% के रह गए हैं, और वहाँ पे ज़्यादातर ये है बांग्लादेश वाले बहुत आ गए. हाँ, क्योंकि एक मतलब बहुत साल पहले मैंने उनका वो किया था कॉन्फ्रेंस, जिसमें सारे आए थे, तो उन सब ने फिर ये सब वहाँ पे डिस्कस किया था, तो इसलिए मुझे पता है APDP के साथ. ठीक है, so I believe I covered all the northeastern states. सिक्किम is the 8th one. सिक्किम थोड़ा सा अलग है, ज्योग्राफिकली भी थोड़ा सा अलग है. सिक्किम का हिस्ट्री, सिक्किम अगेन वाज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया. तो सिक्किम और तिब्बत ये एडजेसेंट है दोनों एरियाज, और ये एक ही रीजन है बेसिकली. ठीक है, लेकिन तिब्बत पे कब्जा कर लिया चाइना ने. सो दैट इज हाउ चाइना जो है सिक्किम के बॉर्डर पे आ गया, राइट. तो एंड देन सिक्किम में हैज़ बीन ए बुद्धिस्ट स्टेट रिलीजन वाइज अगर हम देखें, और वहाँ भी राजा था, किंगडम था. तो उसको सिक्किम के राजा को ये खतरा था कि जैसे तिब्बत ले लिया ऐसे सिक्किम भी चला जाएगा, चाइना कब्जा कर लेगा. तो दे रिक्वेस्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट देम परमानेंटली, सो दैट इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी दे कैन बी सेव्ड फ्रॉम चाइना. तो इंडिया ने सिक्किम को प्रोटेक्टेड स्टेट का दर्जा दिया, संरक्षित राज्य, प्रोटेक्टेड बाय इंडियन आर्मी. तो इस तरह से इंडियन आर्मी वहाँ पहुँच गई, और उनके बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत की सेना चली गई. बट दैट वाज एन इंडिपेंडेंट स्टेट प्रोटेक्टेड बाय इंडिया, नॉट पार्ट ऑफ इंडिया. फाइनली फिर क्रेडिट गोज टू इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी डिड समथिंग, and the king said that we are ready to annex with India. So agreement was signed and Sikkim became an Indian state. तो उस दिशा में इंदिरा गांधी did a commendable job कि Sikkim became part of India. तो चाइना का खतरा थोड़ा सा कम हो गया हमारे लिए. राजीव गांधी did a commendable job, जिन्होंने नागालैंड की प्रॉब्लम भी टू ए ग्रेट एक्सटेंट रिजॉल्व की, जिन्होंने असम की प्रॉब्लम सॉल्व की जब असम में अकॉर्ड हुआ. बट डिस्पाइट दैट इट इज बिलीव्ड, इट्स ए परसेप्शन, दो आई कंप्लीटली डू नॉट एग्री विद दैट, कि 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट पे किसी का ध्यान नहीं था. दिस इज ए रॉन्ग परसेप्शन, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट की सेपरेट मिनिस्ट्री आज से 25-30 साल पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट में बन गई थी. एक मिनिस्टर जो केवल नॉर्थ ईस्ट के अफेयर देखता था. मनमोहन सिंह गॉट इलेक्टेड ट्वाइस फ्रॉम असम. इसीलिए मनमोहन सिंह could have win the election from any part of the country, but to give this signal to the northeast that the prime minister is coming from the northeast, he went to Assam and got himself elected to Rajya Sabha from there. So that is how इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो पहले की सरकारों ने भी की. अब वो कौन कितना सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ, बिकॉज कॉम्प्लेक्स इश्यूज तो रही हैं नॉर्थ ईस्ट में. दिस गवर्नमेंट 14 के बाद जो गवर्नमेंट आई है, दे हैव ऑल्सो मेड लॉट ऑफ एफर्ट्स टू इंश्योर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन नॉर्थ ईस्ट. जैसे नागाज के साथ भी जिस तरह की बातचीत हुई, अभी मिज़ोरम के साथ हुआ, असम मिज़ोरम का उन्होंने अभी समझौता कराया. तो इस तरह के एफर्ट्स की हैं. बट देन अभी जो मणिपुर में हुआ, तो पिछले 8 साल 9 साल की मेहनत पे पानी फिर गया है इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. तो वो जो चाहते थे वो नहीं हुआ वहाँ पे उस तरह से.
This session was really insightful because many such facts related to northeastern states of India were known, which were lesser known earlier. We got to know a lot about them, especially for the state of Sikkim and Arunachal Pradesh, also for the state of Nagaland, how these states form their own governments and then later on merge with India. So these facts really will help us all to later on communicate with the students, enhance our teaching learning experiences. Thank you so much all for participating in the session. In the next session, we will again come up with another topic of contemporary issues. Till then, thank you.